Is the screen visible, Peter? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, in our yesterday lecture, we completed with the two major topics, that was nature of entrepreneurship and the importance of entrepreneurship. And today we are moving ahead with the new topic, that is functions of an entrepreneur. Now we will study the function uh, from two different perspectives. These are the function, four different functions we will study first. That is innovation, research, assumption of risk, economic development, and overcoming resistance to change. And then we will learn function from the viewpoint of Klebli, that is exchange relationship, practical administration, management control, and technology. Ahead with the function. The first function, that is the innovation. Now, what is an innovation? We have understood the innovation from the point of view of the Schumpeter. What do Schumpeter say? Any new thing that is brought by the business, whether the new thing is brought in the internal environment or in the external environment. Okay, so when I talk about the new things in the internal environment, it can be the process of production. Okay, it can be going with the new technique, methods of other thing to do the same thing. Now when I'm going with the method, technique, rules, regulation which were not followed earlier, or which is not generally followed in such an industrial setting, then we can say it as an innovation. The things which are already there cannot be said as an innovation. Clear with this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yeah, so जब हम where we are seeing that we are changing rules, we are changing regulation, we are changing the technique, and it is affecting the way of working of an employee. Either we say that we are going with the change in the task. See, method of working, yeah, going with the new technique would affect the different tasks that the people have to do while doing the job. Okay, we have also learned that the job are interrelated, so this may also affect the interrelationship of one job with another job. When I am going with the innovative techniques, the innovative methods, the innovative procedures. Okay, so when I am adopting such type of innovation which is affecting the pattern of working in my organization, then it is termed as innovation adopted in the internal environment. Okay, and when I am working with an innovation with which no doubt this will also affect the internal working, but through which I want to grab the external opportunity or to overcome the threat. So the purpose of innovation is to grab the opportunity, yeah, overcome to the threat. Then the innovation is from the point of view of external environment. Okay, so when I'm saying that, okay, I'm coming with the new product, or we are saying coming with the new type of services, this will also lead to the change in production process. But now why I'm changing the production process? Because I want to grab the opportunity, or I want to come up with the overcoming with the threat. Okay, so this is what we are saying, that innovation can be from the point of view of internal environment alone, where the focus is on reduction in the cost, improvement in the quality. Yeah, we say that minimum wastage, yeah, to increase the productivity of the different resources. So when the viewpoint of the innovation is all these things, we can term it as the innovation from the point of view of internal environment, and the external environment grabbing the opportunity or overcoming with the threats. Okay, both will lead to the changes in the internal working, but the perspective or the outlook, what they want to achieve with certain innovative thing is different. Clear with this? Yes, ma'am. Okay, so all these things we have already learned in Schumpeter, or we have seen in the nature and the importance. So not going with the same thing again and again and again. So I try to explain you the same with some new understanding. Now moving ahead with another point, that is about the research.
Now, in order to bring innovation, when I'm talking about bringing the innovation, how innovation can be brought? Innovation can be brought only when proper research is done about the thing. Okay, and when I talk about the research, and now I'm saying that coming up with a new product. Okay, so in that case, when the entrepreneur want to come up with a new product, they can the research is possible in two different ways. First is going with an in-house research. What is an in-house research? It means that the enterprise or the firm itself have one department which is research and development department, and people in that department are constantly occupied in coming up with different type of product, either in a in a, in a same business in which they are dealing. Say for example, if a particular person have a business of mobile instrument, okay, and when they have the business of mobile instrument, there can be a research and development department which is uh, doing constant research on the mobile instrument to make the instrument more better in terms of increasing the memory or making it lightweight, yeah, coming up with a better design. So here there can be the design portion, there can be the better quality of various things inside it, which would satisfy or which would lead to more satisfaction of the needs of the people. So if there is more memory, we can store more, or we can say better RAM, we can go with number of applications uh, at a same point of time. So this is what I am saying, that the research that is done in order to come up with a new product is done through the company itself by employing the people inside the organization. Now that जो अभी मैंने आपसे कहा कि मोबाइल की कंपनी है and they are coming with the doing research with the mobile instrument itself, but research can also be done other than the product that they are dealing with. So this is what I'm talking about, certain new type of product which would uh, help in proper development or better understanding the needs. जैसे mobile company came up with the tab. Now tab is altogether different from mobile and the purpose is different. Or laptop company coming up with the tab. So laptop is different, tablet is different, laptop company coming up with the new type of mobile. Okay, yeah, new type of other things. Yeah, altogether different type of businesses. So research can be done for the same product or for the different product, so that either the company can grow vertically or horizontally, or we say about um, the diversification of the product by coming up with a new type of product in altogether new type of market. तो अभी तक मैं आपको इन हाउस रिसर्च की बात कर रही हूँ. इन हाउस रिसर्च में भी ये अलग अलग चीज़ें होती हैं. Other than in-house research, they can also purchase patent from the people who have undertaken, who went with the different type of innovative things, and the business do think that this product can be marketed or can be commercialized. In SPB, you have learned about the combinations. In combination, you have learned about the patent pool, a different type of pool. One of the pool was patent pool, where different businesses join hands together in order to use the patent. Okay, so this is how, when I talk about the research which will help in bringing the innovation. अभी तो मैंने सिर्फ आपको product point of view से समझाया. Research can also be for the process. Research can also be for the techniques. Research can also be for supply chain or the distribution channel or other things. So this is what, in order to bring the innovative things in the business from internal or external point of view, the research is required to be done by the people in the organization or the entrepreneur themselves, to ensure that they would be ensuring what? Ensuring the survival, ensuring the growth, yeah, ensuring the starting up of a business with the new products and the services, yeah, with the similar product and services by the innovative techniques. So here the research is what? Ma'am, Yeah, बोली बेटा.
Ma'am, some students are waiting in the lobby. Please join them. Okay. Uh, Done, beta. Now, moving ahead with the thing, research. Here we talk about entrepreneur think. Research is only possible when the people have an idea. जो हमने देखा creativity and innovation. Creativity is an idea, innovation is an implication of that idea into the reality. So think of an idea and put them into a practice, and that idea can be of anything I just explained. Apply the quantitative technique to test their applicability. So when I'm talking about applying the idea, applying the new type of process. So now whether the new type of process will lead to the result that I want or not. So this is what I want to, before implementation, I want to taste it, whether the thing would be proper or not. You might have seen that whenever we are ill, हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऑलवेज से कई अगर बीमारियों ने थोड़ी सी भी सीरियस या ऐसा लगता है कि इट इज़ बेटर टू गो विद सर्टन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. तो व्हाट दिस इज व्हाट कि हम दे वांट टू अंश्योर कि कोई भी दवाई देने से पहले दे वांट टू अंश्योर कि अ पर्टिकुलर डिसीज है या नहीं है तो कितना सीवियर है. उस बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि फ्रॉम द डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल विच वुड बी द मेडिसिन विच वुड बी बेस्ट सुटिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन टू ओवरकम फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसीजेस. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जब जब टेस्ट के लिए सैंपल लिया तो सैंपल को टेस्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि ये पोर्शन, जैसे डेंगू का टेस्ट अलग होता है, मलेरिया का टेस्ट अलग होता है, हर एक टेस्ट अलग होता है जहाँ पे वो लोग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं. दे टेक एंड आइडेंटिफाई कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस ब्लड पाया गया या यूरिन में पाया गया या नहीं पाया गया, एंड इफ इट वाज दैट how much it was there. So this would identify की severity कितनी है. तो whenever in a similar way जब social sciences के अंदर research होता है तो they go with such type of thing, sample study. तो जैसे ब्लड का हम कहते हैं ना सैंपल लिया और उस सैंपल से आइडेंटिफाई किया कि बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. सिमिलरली एक प्रोसेस को जब एंटरप्रेन्योर चेंज करना पड़ चाहता है तो पहले वो चीज़ क्या करेगा, उसे एक छोटे से ग्रुप में ट्राई करेगा whether the thing is effective in a group or not, and if they find that the thing is effective, productive, then the same thing would be applied all over the organization which will lead to the increase in productivity. तो सैंपल पे टेस्ट किया मतलब कि सैंपल के कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन लिए होंगे एंड देन दे माइट हैव आइडेंटिफाइड दैट यस द टेक्निक इज गुड एंड शुड बी अप्लाइड. तो ये क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स which will help in testing their applicability. तो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, in what proportion. So there are various alternatives available and now we are talking about that how much change should be made, in what proportion the change should be made, in which department the change should be made so that the productivity can be improved. Okay, तो ये मैंने internal focus किया. वैसे ही एक्सटर्नल रिसर्च, मार्केट में रिसर्च किया जाता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट आर बीन देयर एंड देन it is identified that okay, product में what all changes are demanded by the people, and if they come up with the changes, what would be the cost, uh, and how these changes would help them to earn more profit or would help in them to survive in the market. So this is what we are again saying, the quantitative techniques that are there, that are available to identify whether one should go for it or not to go for it. अब आप स्टैटिस्टिक के अंदर टी टेस्ट जैसा पढ़ा है आपने, जेड टेस्ट पढ़ा है, एफ टेस्ट पढ़ा है ना बेटा? Yes, ma'am. तो ये सब टेस्ट क्या थे, आप जब एग्जाम्पल याद करोगे तो ऐसा कुछ रहता था कि एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें इतना प्रोडक्शन करते हैं तो इतना डिफेक्ट होता है. अब उन्होंने कोई नई टेक्निक इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से डिफेक्ट अब
इतने लॉट में इतना डिफेक्ट आया. अब सी दोनों लॉट साइज अलग होती है, डिफेक्ट का नंबर अलग होता है, एंड देन वी वांट टू आइडेंटिफाई कि वेदर नई प्रोडक्शन टेक्निक यूज करने से डिफेक्ट कम हुआ या नहीं हुआ. So this is what we are saying, the quantitative techniques, which will help us to understand whether the new thing should be applied or not. Clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is what research will help the entrepreneur to take the decisions, would would help it will help the entrepreneur to understand that okay, what are the risks if they go with certain decisions. Research would help them to take different calculative risk. जो second portion हम पढ़ने वाले हैं, assumption of risk. Okay, so with the different quantitative techniques, by collecting different data, see research ऐसा मत सोचो कि is only on product, it can be on society. See, scientific research होता है और social research होता है. In marketing we talk about marketing research, in HRM we talk about HR research. Similarly in economics there are economic research. Okay, psychology they are the psychological tools for the behavioral research. So research in society can be for different things, and here भले ही अलग अलग चीज़ों के लिए हो, पर करते क्या है, वी आर सीइंग द सैम्पल, एंड फ्रॉम द सैम्पल वी आर सीइंग वेदर हम जो नई टेक्निक या कुछ नया करना चाहते हैं, या हम वी वांट टू नो द सिवियरिटी ऑफ द थिंग. जैसे मैंने इनिशियल एग्जांपल में कहा कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी की सिवियरिटी कितनी है वो जानने के लिए भी रिसर्च करते हैं, सो दैट कौन सी दवाई देनी पड़ेगी या कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा विच विल हेल्प अस टू कम आउट ऑफ इट. जैसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट है, तो रिसर्च इज डन टू आइडेंटिफाई कि थ्रेट कितना है, एंड देन कमिंग अप विद द टेक्निक विच विल हेल्प अस टू ओवरकम फ्रॉम दैट थ्रेट. सिमिलरली अपॉर्चुनिटी है, टू द रिसर्च इज डन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, एंड देन कमिंग अप विद द रिसर्च. And then going with the analysis and then identifying कि okay इतनी अपॉर्चुनिटी है तो हम कितना बड़ा बिजनेस यूनिट हम सेटअप कर सकते हैं, या हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 15 years with this particular opportunity in the market. क्योंकि इनिशियल इनोवेशन होगा तो इनिशियल स्टेज में आप अकेले होंगे मार्केट के अंदर, पर जैसे ही you would be you would be with the product in the market, or you would be with the services in the market, and looking that you are earning good amount of profit, other people will also enter into the market, and then when the other people enter into the market, there is always a reduction in the market share. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, रिडक्शन इन द मार्केट शेयर होता है, पर तो भी अभी तक हमने सारा मार्केट तो कवर नहीं किया रहता है, एंड हम ये भी देखते हैं कि देयर वुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर विद द पासेज ऑफ टाइम बाय सम न्यू बिजनेसेस कमिंग अप या न्यू कस्टमर्स ज्वाइनिंग इनटू द मार्केट. जैसे अगर स्टेशनरी की बात करूँ, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और स्टेशनरी के अंदर भी वेर आई टॉक अबाउट द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ओके, तो पॉपुलेशन कितनी फेज पे बढ़ रही है, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन कि मेरा मार्केट कितना बढ़ता रहेगा. क्योंकि जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही तेज़ी से आई उससे थोड़ी सी कम तेज़ी से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं. हम देखते हैं ना कि जो पुअर इन सबर्ब्स के अंदर भी वी डोंट फाइंड पीपल गोइंग टू स्कूल्स, एंड सो ओके, इतनी पॉपुलेशन, उसमें से मिडिल क्लास कितना, हायर क्लास कितना, लोअर मिडिल क्लास कितना, एंड देन वी आर इंश्योरिंग दैट ओके इतने लोग तो स्कूल में जाएंगे, तो इन फ्यूचर हमारा मार्केट कितने रेट से बढ़ेगा, एंड इतने रेट से बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज दिस मच नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द करंट डिमांड. एंड अब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट हाउ मच इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड to see that we would be able to grow. Other than current customers, नए customers को हम कैसे satisfy कर पाएंगे, या how we can ensure that our product is available in the market when they are demanding for it. So this is what I am saying, that researches are made in order to identify कि production कितना होना चाहिए, market क्या होगा, so that various planning or the strategies or various practices, policies, techniques
techniques can be developed by the different entrepreneurs to for the survival or growth of the organization in the market. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so moving with the another point where we talk about assumption of risk. So assumption of risk, why? Because the person is coming up with a new way, whether internal or external things, but when they are coming up with a new way, they have to see whether what are the chances of success. If more chances of success is, it means that lesser risk. If lesser chances of success, it means that more is the risk. और जब भी बिजनेस में हम देखते हैं कि जहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी या फिर हम कहें कि हमने बिजनेस खोला तो कस्टमर्स तो मिल ही जाएंगे, तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा लोग एंटर करेंगे. वाई? बिकॉज एटलीस्ट पैसे तो कमा ही लेंगे. पर जहाँ पे वी फाइंड दैट द पर्सन इज विथ ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, या इन अ बिजनेस वेयर द चांसेस ऑफ सक्सेस इज लेस, या हम कहते हैं कि पर्सन हैज़ टू रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनसाइड द बिजनेस टू एंश्योर दैट द बिजनेस डू सक्सीड. पर अगर बिजनेस सक्सीड हुआ देन रिटर्न्स आर लाइक एनीथिंग. रिटर्न्स मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट इज लाइक एनीथिंग. अगर यानी वी आर, आपने कहीं पे ऐसा सुना होगा कि वेर रिस्क एंड रिटर्न की रिलेशनशिप होती है, तो जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना ही रिटर्न ज़्यादा होता है, जितना रिस्क कम होता है उतना ही रिटर्न भी कम होता है. वेर आई एम कंपेयरिंग, so we say that there is a direct relationship. Increase in the risk, increase in the return. Decrease, if the risk is less, return would also be less in that business. So how much entrepreneur have the capacity to take the risk will determine that what type of business they would be in, whether the risky business or the less risky business. ओके, पर जब हम रिस्की बिजनेस की बात करते हैं तो रिस्की बिजनेस के अंदर भी व्हेन पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, इट इज विद अ कैलकुलेटिव रिस्क. दे आर कैलकुलेटिंग दैट व्हाट मोर एफर्ट्स दे हैव टू पुट इन टू एंश्योर दैट they would be able to attain the things which they want. So this is what we are saying about the assumption of risk. आप लोगों ने लेंस कार्ट का नाम सुना? हेलो, लेंस कार्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना? यस या नो बेटा? Yes, ma'am. किसके रिलेटेड है? एनी आइडिया किसके रिलेटेड है? मैम वो नहीं पता बट नाम सुना हुआ है. जो लोग स्पेक्स पहनते हैं ना, उनका स्पेक्स पहनने, वी टॉक अबाउट द फ्रेम, डिफरेंट फ्रेम. तो जब हम स्पेक्स पहनते हैं तो अलग अलग टाइप की फ्रेम्स अवेलेबल होती है. तो विच फ्रेम वुड बी मोर सूटिंग टू द पर्सन? तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे चश्मा पहनना है तो वी यूज टू गो टू द शॉप इन ऑर्डर टू परचेज द फ्रेम. हम खुद ट्राई करते थे मिरर में देख के कि कौन सी फ्रेम ज़्यादा बेटर रहेगी इन टर्म्स ऑफ कलर या डिज़ाइन. उसमें भी ओवल आती है, गोल आती है, स्क्वायर आती है, रेक्टेंगल आती है, अलग अलग साइज़ की आती है. तो हम पहन के ट्राई करते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई कि अच्छा ये अच्छी रहेगी. तो दिस इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. लेंसकार्ट केम अप विद अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस. उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे आपका चेहरा आपको स्कैन करना है, अलग अलग टाइप की फ्रेम्स आप आपके चेहरे पे लगा के देख सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड कि कौन सी फ्रेम ज़्यादा अच्छी रहेगी. एंड यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन एंड आप आपका नंबर देंगे तो नंबर के साथ चश्मा आ जाएगा. देखिए इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस. तो कहीं पे शॉप की ज़रूरत नहीं है, पीपल कैन ऑर्डर एंड द पर्सन कैन डिलीवर द थिंग्स. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पर अभी चश्मे पहनने वाले लोग कितने कंफर्टेबली वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएंगे, या कितने लोग वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके फ्रेम मंगवाएंगे? तो ये एक रिस्क है ना कि लोगों को ये कन्विंस करना कि द सॉफ्टवेयर वुड बी द बेटर ऑप्शन टू टू परचेज द फ्रेम रादर देन गोइंग टू द शॉप, giving them the guarantee of the quality of the frame or quality of the glasses and other things, that it would well satisfy the needs of the people. Because
कि जो मशीनरी से वो लोग टेस्ट कर रहे हैं या जो उनके पास सोर्सेज है दैट आर मोर रिलायबल। तो ये क्या है, एक रिस्क है कि आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाओगे एंड कितने बेटर तरीके से कन्विंस कर पाओगे सो दैट द पीपल वुड हैव मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। Okay, so this is what I am saying about that coming up with a new business does not ensure the success of the business. The people have to put up lot of efforts. And so we are saying assumption of risk. Idea to put into reality does not guarantee a success, and so there is a risk. So entrepreneur assume the risk of success or failure of an enterprise, and then invest their money, invest their time, invest the other things in the business to start up the business या to operate the business या to grow the business. Even growth में भी risk होता है कि हम यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है पर बाहर दूसरी जगह पे चलेगा या नहीं चलेगा, whether people would like it or not, whether we would be able to get the same amount of customers what we are getting in a particular geographical area, whether we would be able to get from the other geographical area. So assumption of risk can be at different stages. Then we talk about economic development. Now economic development is what we say about development from the point of view of money, earning money. Okay, and economic development by coming up with a business, okay, or starting a new venture, the person start क्यों किया venture? Not to earn losses. Yes, start क्यों किया? So that they can earn something out of it. So by starting up of a business, the entrepreneur himself or herself would be earning from the business, which is what increasing the wealth of the individual entrepreneur. समझ में आ रहा है इतना? Yes, ma'am. When they are starting the business, they are also hiring the people to work in the organization. So they are also helping in increasing the wealth of the employees who are working in the organization. As they are employees of the organization, they are earning. So this is what increasing the wealth of the employees. Clear with this? Entrepreneur की wealth increase हुई, employees की wealth increase हुई. Then as they are in business, they are demanding raw material, they have demanded machinery, yeah, we say they are demanding electricity or other things, they are demanding for transportation, they are demanding for furniture. So increase in the business of all these units also. Increase in the business मतलब क्या? Increase in the wealth of all these people also. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फिर coming up with the product and want to sell it into the market, we will require dealers, we will require other facilities, again transportation, or if I'm with ice cream or cold, then I would require the cold storage and other facilities. So as I have started with the business and I want this facility, it would also lead to the increase in the wealth of these people also. So हमारी marketable product बनने से पहले the people contribution increase in the wealth, market प्रोडक्ट बनने के बाद in order to reach to the market until it is consumed by the person. जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रही हूँ, I am going with the TV, I am going not TV, I am going with the fridge, I am going with the AC and all these things, then installation is also required. तो जो लोग इंस्टॉल करने आएंगे वो लोग भी पैसा लेंगे ना, तो उनको पैसा क्यों मिलेगा? Because we have came up with the product. So this is what increase in the wealth of these people also. So this is what a business is helping in increasing the wealth of number of people living in the society. And when I'm talking about increase in the wealth of number of people living in the society, I'm talking about the economic development of the society with the help of the business. Clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the final function, that is overcoming resistance to social environment. So whenever any new things are done, whether internally or externally, there is always a resistance to change. So if I'm talking, जैसे मैंने आपको लेंस कार्ड का एग्जांपल दिया कि नॉर्मली जब लोग जिनको चश्मा आता है तो हैबिट ही हम लोगों की ऐसी होती है कि नंबर चेक करवाने गए, जैसे पता चला कि ओ नंबर आ गए हैं, then we go directly to the spectacle shop in order to identify that
कौन सी फ्रेम अच्छी रहेगी हमारे फेस पे एंड क्या नंबर है, एंड देन वी विल गो हमारे स्पेक्टिकल्स ले लेंगे. सो coming up with the software where buying such things uh, through the software, through internet, it is really difficult to convince the people. जैसे grocery stores भी जब online आए थे तो housewife, not housewife, sorry, housemaker कहना चाहिए, housemaker या the people in the family, they really resisted कि नहीं, we want to check the quality, we want to check other things and then only we will order. It is really difficult to rely upon the person and then get the things ordered. Similarly for vegetables and fruits, आपने देखा होगा रिलायंस जियो और काफ़ी सारी ऐप ऐसी भी है जहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर सेलिंग ऑनलाइन. So see, people generally have a certain habit or pattern of working, and when through new technology or through new business, when we try to bring changes, it is really difficult and the people may resist to the change. And now through proper understanding, through proper promotional or other things, or through proper communication, the entrepreneur has to put in the efforts to overcome the resistance to change from the customer side, from the dealer side, from the supplier side, from the employee side. See, हम जहाँ जहाँ पे change ला सकते हैं, suppliers साइड भी चेंज होता है. कैसे? Say for example, if I'm going with a new method of production and now earlier I was demanding certain quality of goods, now I require different quality of goods, and for that different quality of goods, supplier has to change certain method of production to come up with that quality. So there can be a resistance of change from the supplier, that what is the problem with the present quality. They may have produced certain amount of goods which they might now find difficult to sell. If they agree to the change that the organization want. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically resistance to change काफ़ी अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है. कौन से नज़रिए? इट कैन बी फ्रॉम द सोशल कस्टम्स, it can be from the culture, it can be from the value, it can be from the belief, it can be from the economic point of view जो मैंने अभी आपको explain किया. And so the entrepreneur has to work hard through knowledge, through proper communication, through various promotion to overcome the resistance to change from the social environment. और social environment में कौन कौन आ गए? मैंने कहा सप्लायर्स आ गए, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उससे पहले के जितने भी लोग आर people are related to the business, and the decision of an entrepreneur may affect the pattern of doing business. Or these all people would be there, our employees. Similarly, from the marketable making of a marketable product to the sales of that product, जितने भी लोग हैं, and they are affected by the decision of the business. We say about overcoming the resistance to change from that portion also. So this was about one way of looking to the function of entrepreneur. Moving with the another thing, where the functions are classified into four, that is exchange relationship, practical administration, management control, and technology. Now what are these functions? Moving with the first thing, that is exchange relationship. Exchange means what are the businesses exchanging? Either they are exchanging product or they are exchanging services, and in return what they are getting? They are getting money. Okay, so this is what exchange relationship. And why do people will purchase a product or purchase a service of a business? Only when they find that the particular product or services would help in better satisfaction of the needs. And when we are talking about bringing changes, bringing innovation, either altogether new product or new type of packing, yeah, certain modification in the product. So this is what perceiving the opportunity in the market, and by perceiving the opportunity, coming up with a new type of product and new type of design, and ensuring that the people would purchase it. Okay, so this is what we are saying. I just said about the first point. Then gaining command over the scarce resource. Now this is an internal innovation that we are talking about, where effectively utilizing the various factors of production so that the cost can be minimized.
So this is what we are saying, gaining command over the scarce resources, and the resources are always scarce. We have talked in the earlier lecture. Purchasing the inputs, various things which are required to manufacture the product, we are to trade the product. So here we are talking about purchasing the input, various facilities that are required. जैसे trading में, if I'm talking about the ice cream parlor, a different type of refrigerator would be required. In ice cream parlor, we also, if they come up with a different type of sundaes or different type of combination of ice cream other than the pack ice cream like cone or candy, they can have a better business. But then for that better business, they have to purchase different type of resource, a special type of plate or biscuits or sauces or other things, so that so that they can serve the people. They require certain type of ambience to be designed in the store, so that people are attracted or people would like to see it or people are comfortable with it. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is what purchasing the input, and by purchasing the input, they are giving money. Exchange हुआ ना? So purchasing the input, they are giving money. But now we are also talking about efficient utilization of this input, so that we would be able to minimize the cost and earn more profit by selling the same product, or by selling the product into the market by highly satisfying needs of the people than what the competitor were satisfying up till now. या इवन वी वेर सेटिस्फाइंग अप टिल नाउ. सिर्फ कंपटीटर क्यों, हम अपने आप को भी तो ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं. तो हम अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, मतलब क्या, अर्लियर हमारा प्रोडक्ट इतनी नीड्स नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था, बट बाय मेकिंग चेंजेस नाउ वी आर कन्विंसिंग द पीपल दैट वी वुड बी बेटर एबल टू सर्व यू विद दिस चेंजेस इन द प्रोडक्ट. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द केचअप कंपनी. अब केचअप कंपनी के अंदर शायद मैगी केचअप काफ़ी टाइम से मार्केट में है. और जब इनिशियली मैगी केचअप की बॉटल आती थी, इट वाज इन कांच की बॉटल आती थी. हम, जब मैं छोटी थी और केचअप की बॉटल हम बाहर से लाते थे खरीद के, तो कांच की बॉटलें आती थी. बट नाउ वी फाइंड अ पिचकू टाइप ऑफ पैक्स, जहाँ पे हम स्क्वीज करते हैं और केचप बाहर निकल जाता है. पर जब हम कांच की बॉटल में से केचप बाहर निकालना चाहते थे, तो वी हैव टू रियली वो बॉटल को बार बार शेक करके निकालना पड़ता था. एंड देन केचप हमें चाहिए इतना सा, पर काफ़ी टाइम पे थाली में बहुत सारा गिर जाता है एंड वेस्ट हो जाता है. तो दिस इज व्हाट, बाय चेंजिंग द स्टाइल ऑफ पैकिंग, दे आर नाउ एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर मोर. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. काफ़ी एडिबल आइटम्स जब जिपलॉक पैकिंग से आई, जैसे हल्दीराम है जो 1 kg का पैकेट बेचता है, या ग्वालिया है जो 1 kg का पैकेट बेचता है. तो 1 kg का पैकेट एक दिन में तो खाली होगा नहीं. इवन काफ़ी दूसरी टाइप की ब्रांड्स भी है जो 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के बड़े बड़े पैकेट बेचते हैं. एंड एक पैकेट ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में खाली हो जाए. देन जिपलॉक होगा, इट मीन्स दैट वो, अगर हमने पैकेट खोला भी है तो वो चीज़ गिरेगी नहीं. और जैसे बारिश का मौसम है या ऐसा कुछ है, तो चीज़ें अंदर की खराब नहीं होगी. द क्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट इवन इफ द पैकेट इज ओपन. So we can close the things in proper form. So this is what here we are also talking about कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, but they developed certain technology कि ऐसा ziplock यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, हम इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, so that we can well satisfy the needs of the customer. और ये सारी कंपनियाँ बरसों पुरानी. So we are talking about purchasing the input in order to ensure that we can make the optimum utilization in order to satisfy the customer well. तो यहाँ पे सिर्फ competitor के व्यू से मत देखो, हम अपने आप को भी कैसे better बना सकते हैं, that we would be able to serve our customer.
हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। यहाँ पे कॉलेज में लाइट चली गई है। अ, हम लोग अलग डिवाइस से पढ़ रहे हैं अभी। मैं आपके साथ दोबारा मैंने फोटो खींचा है, उसको शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के लेक्चर में भी लाइट चली गई थी। जस्ट शेयरिंग बेटा। दिख रहा है बेटा आपको फोटो? No, ma'am. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Now आपको मेरा चेहरा, ओके मैंने ये देखा तो चेहरा मेरा नहीं दिखेगा आपको। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इट। कहाँ थे हम? परचेज इनपुट पे। इस फोटो को बड़ा नहीं कर पा रही हूँ मेरे स्क्रीन पे। The last point is about marketing of product and responding to competition. So ये topic भी मैंने where we discuss about the different thing. I have also covered this thing, that how the people would be, entrepreneur would be marketing their product, the innovative product, in order to ensure that how they can prove themselves better than the competitors. So this is what we are discussing about the exchange relationship. Moving with the other thing, that is a practical administration. Now in practical administration, we are talking about who? We are talking about dealing with the society, yeah, dealing with the government. So we are saying that practically looking at the things. So dealing with public bureaucracy, where we are try to overcome the change from the society point of view. We are talking about management of human relation, where we would be able to develop good relationship with the different stakeholders. Okay. uh, and ensuring that we would be going with the win-win situation. यानी हमारे suppliers भी हमारे साथ deal कर रहे हैं, both would be earning. I would also be earning, my supplier would also be earning by coming up with doing business with me. Similarly, my various stakeholders, my employees would uh, also be benefited when they are working in my organization. Okay. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट आई एम नॉट वायोलेटिंग एनी लॉ or violating any rules and regulation, and I am working within that framework. Okay, framework that is designed by law, और आप लोग ने एसपीबी के अंदर एथिक्स पढ़ा होगा. तो आई एम फॉलोइंग, आई एम सीइंग दैट आई एम गोइंग विद द एथिकल थिंग्स to ensure that the society would be benefited by my business, and I myself would also be benefited. तो मैं तो benefit करूँगी, पर society भी benefited रहे. Then management of customers and suppliers relation. So these all are the practical administration that an entrepreneur do undertake to ensure कि उनका बिजनेस पहले तो सेटअप हो, मतलब डू स्टार्ट, उसके बाद डू survive, and then we talk about do grow, by ensuring that they are able to manage these things well. Then we talk about management control. तो मैनेजमेंट कंट्रोल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है, या अलग अलग डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो दे आर गोइंग विद द वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस, जो मैंने आपको एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस भी कहे, जैसे planning, organizing, directing, and controlling of various things, of various resources in the organization. And finally, we are talking about the technology. So technology means the entrepreneur should be aware about what are the new things, what are the new development, and then adopting those development, adopting those things to ensure that the proper technology
can be used in the internal environment, yeah, through adoption of proper technology, the entrepreneur would be able to grab the opportunity, yeah, overcome the threats that they are seeing from the external environment. समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके और जब हम बिजनेस के प्रोसेसेस को चेंज करने की बात करते हैं, इट इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. Okay, so by changing the various business process, we are ensuring that we would be better able to utilize the various resources. थर्ड पॉइंट कह रहा है अपग्रेडिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. सो दिस इज अगेन upgrading the process, upgrading the product quality to ensure that we would be able to satisfy the customer, we would be able to minimize the cost by the different proper utilization of the resources, and finally introduction of new production technique and products. सो ये सारे चीज़ें रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी है. मेजर एम्फोसाइज क्या है कि बाय इम्प्लीमेंटिंग द न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर ensuring the good delivery of the services to our customers, yeah, good delivery of the product to our customers, and we are also ensuring the minimization of cost to our business unit by proper utilization of various resources. Either where I talk about acquiring and concerning assembly of the, मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, असेंबलिंग ही है ना बेटा फर्स्ट पॉइंट? हेलो, टेक्नोलॉजी में जो पहला पॉइंट है एक्वायरिंग एंड असेंबलिंग ही है ना बेटा? Yes, ma'am. Acquiring and ओवरसीइंग असेंबलिंग है ना? yes, ma'am. ओके, सो हम टेक्नोलॉजी की जो मैंने अभी आपको बात की, एक्वायरिंग एंड ओवरसीइंग द असेंबलिंग ऑफ अ फैक्ट्री, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या अपग्रेडिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, या वेयर वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन of new production techniques, yeah, product. So these all are the functions which the entrepreneur does where we talk about in the entrepreneurship, yeah, in their businesses. Clear up till now, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. We are not moving ahead today. इसका आगे का जो भी है, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है. We will see it on the next working day, that is next Thursday. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Okay, beta. Bye. Have a good day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, beta.